Hi friends, I hope you all are safe and at home. I am Kapil. In my previous videos, I have talked about power of thinking. If you can think big, you can achieve big. Also, I have talked about change. But now today, I am talking about learning. Learning is a never-ending process, my dear friends. Learning is a never-ending process. It's a journey. I have seen many people who say, I am open to learn new things. I am open to adopt new things which I am not familiar about. But my question is that, are we really open to learn new things? Are we really interested to adopt new things which we are not familiar about? There is a huge question mark after this. हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो सीरियसली लर्निंग कर रहे हैं, बट आप में से ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे who just say I am open to learn new things but they don't take any action towards learning. So my dear friends, learning तो होनी चाहिए. You should always be interested towards learning, but you should take action also towards that. Words without actions doesn't make any difference in your lifestyle. Correct? Are you agree with me? So whenever any person speaks or talks about any topic or any subject which we are already familiar about, हमारा दिमाग कहता है भाई मुझे तो पता है इस टॉपिक के बारे में मुझे पता है. आई ऑलरेडी नो इसमें क्या होना है, कैसा सॉल्यूशन होना है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा. आई ऑलरेडी नो अबाउट इट एंड देन वी स्टार्ट लूजिंग आवर फोकस. बट माय डियर फ्रेंड्स, एवरी प्रॉब्लम हैज़ मल्टीपल सॉल्यूशंस. हर एक प्रॉब्लम को हम मल्टीपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपको पता है किसी टॉपिक के बारे में, किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में आपको पता है, दैट्स अ ग्रेट थिंग. बट डोंट restrict yourselves to your logic and to the way you crack it or the way you solve it. There is possibility that the guy who is telling you about any topic or any subject, he will tell you some new logic, how to crack your problem, how to solve your problem. हर प्रॉब्लम के काफ़ी सारे सॉल्यूशंस होते हैं. अगर कोई बोल रहा है किसी टॉपिक के बारे में, हो सकता है वो कुछ नया सॉल्यूशन आपको बताए, कुछ नया अप्रोच आपको बताए कि किस अप्रोच से उसको सॉल्व किया जा सकता है, क्या नई मेथोडोलॉजी यूज़ की जा सकती है उसको सॉल्व करने के लिए. सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज कीप योर माइंड, eyes and ears open to learn new things. Just by saying I am open to learn new things, it doesn't mean that you are really open to learn new things. It's my humble request कि always keep your brain, eyes and ears open to learn. Learning can come from anywhere. Learning can come from anyone and any time, my dear friends. It's a continuous process. It's a continuous process. I will say even learning can come from salesperson. So when I say salesperson, it doesn't mean that the marketing head or the sales head and all you should go and approach to sales head or the marketing head for the tips. No, my dear friends, no. When I say salesperson, it means fruits seller or vegetable sellers as well. Just as an example, so whenever I have seen, it's my personal experience as well, I have noticed some of the things. जब भी हम अप्रोच करते हैं किसी फ्रूट सेलर्स को, अप्रोच करते हैं किसी फ्रूट, अगर मुझे एप्पल परचेज करना है, आई विल गो टू द मार्केट एंड आई विल आस्क फॉर, भैया सेब कितने के दिए, क्या रेट है. ही विल आस्क फॉर, लेट अस जस्ट एज्यूम 150 रुपीज़ पर kg. इमीडिएटली ही विल से, भाई कितना दे दूँ, 1 किलो कर दूँ या 2 किलो कर दूँ. You take a pause and then say, भैया 1 किलो दे दो. And the moment he will finish his weighing process, immediately he will say,
भैया ऑरेंज भी दूँ क्या, ऑरेंज कितना कर दूँ आपको, ऑरेंज भी 1 किलो कर दूँ क्या? सो इट्स अ क्रॉस सेलिंग। द मोमेंट यू विल से हाँ ठीक है आधा किलो ऑरेंज कर दो, देन ही विल से भैया 1 किलो कर दूँ क्या, रेट थोड़ा सही कर दूंगा, रेट थोड़ा कम कर दूंगा। So he will push for, so he has done cross selling, he has done upselling, then he has done push, he has used push strategy as well. So this kind of lot of strategies, though that fruit seller is not a MBA pass out, he is not a graduate, he may or may not be a graduate, but he is not a he is not a normal IT guys or the MBA pass outs, but still he knows that logic, how to upsell, cross sell, use push and pull strategies. Why? How? Because he has learned all those things, he has learned all those strategies from someone or from his own experience as well, from the customers who कम जो उनके पास आते हैं, उनसे सब्जी खरीदते हैं, एक बंदा क्या बोलता है, दूसरा बंदा क्या बोलता है, उनके एक्सपीरियंस से he has learned all those skills, my dear friends. So if that the fruit seller can learn all those things, then why can't we? Why should we restrict ourselves to learn from? भाई मैं अगर मुझे लर्न करना है then I'll go to subject matter expert only. I cannot learn from anyone. भाई it is not the case. ऐसा नहीं होता है. Learning can come from anywhere. But yes, if you are looking for any technical thing, if you are looking for any if you are looking for help or some knowledge about any specific subjects, then yes, subject matter experts are always there to help you out. You can take a help of trainers, you can take a help of coaches, mentors. They are there in the market, they are expert in their field. So for any subject matter things, any expertise things, yeah, experts are always there to help you out. But your learning is not restricted from any high profile trainers or from any high profile persons who have some tags or some brands with them. Learning can come from even from a beggar as well, my dear friends. So just another example of learning from a beggar. मुझे लगता है आपने भी ये नोटिस किया होगा, जब भी हमारी कार या गाड़ी किसी सिग्नल के जब रेड लाइट पे खड़ी होती है, बेगर्स आते हैं, they start knocking. So they keep on knocking until and unless they will get either money or clear cut no. Until and unless he gets no or money, he will not move on. Why? Have you ever noticed this thing? Why? Because his objective is clear in his mind. मुझे करना क्या है? जब भी मैं किसी बंदे को अप्रोच करूँगा तो या तो वो मुझे मेरे से कन्विंस होकर वो पैसे दे देगा, वॉट एवर ही वॉन्ट टू गिव, वो मुझे पैसे दे देगा, और ही विल से नो. अनटिल एंड अनलेस इन दोनों में से कोई एक चीज़ वो करता है, आई हैव टू कंटिन्यूसली कीप ऑन knocking. The moment you say no, then he will go on to another car. So it doesn't mean, if he is getting no, it doesn't mean कि वो demotivate हो गया है. No, क्योंकि उसके मॉर्निंग में ही उसके दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई है, patience and motivation. So they are the self motivated guys. उनको सिर्फ हमसे और आपसे ही नो नहीं मिलते हैं, दिन भर में उनको मल्टीपल नोज मिलते हैं, लेकिन उनके माइंड में ये चीज़ क्लियर है कि नो के बीच में अगर मुझे 1000 नोज मिलेंगे, उन नोज के बीच में मुझे यस भी मिलेंगे, मुझे काफ़ी सारे यस भी मिल सकते हैं. सो उनके पास ये प्रोबेबिलिटी होती है कि उन नोज के बीच में वो मुझे यस भी मिलेंगे. उस प्रोबेबिलिटी को वो लेकर आगे चलते हैं और जिससे वो हमारी गाड़ी नॉक करते हैं. या तो फिर हम उन्हें पैसे दे देते हैं, या तो उन्हें हम नो बोलते हैं. अगर हम पैसे देते हैं, उनका पर्पस सर्व हो जाता है, उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है, उनको सॉल्यूशन मिल जाता है. अगर उनको नो बोलते हैं हम, देन उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है कि नहीं, मुझे
दूसरे ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस के पास जाना है, वहाँ मेरा पर्पस सर्व हो सकता है. So my dear friends, these are few of my learnings. These fruit sellers, vegetable sellers के पास आप जाएंगे. So if you ask for cauliflower, then he will push for, he will also ask for cabbage. कितना कर दूँ, cabbage भी दे दूँ क्या भैया? If you ask for spinach, then he will also ask for, भैया मैं मेथी भी दे दूँ क्या आपको? So all these things they have learned on their own. They have learned on their own experience, or they have learned from somebody else's experience, my dear friends. So we should always keep we should always keep our brain, mind, eyes and ears open to learn new things. At last I will say, learning is not a destination. Learning is not a destination, my dear friends. Learning is a journey. Learning is a continuous process. It can come anywhere, anyone. It can come from anyone. It can come from anywhere, anytime. Just we should open to learn. Thank you so much, my dear friends, for listening to me. I will come with another topic next time. Till then, stay safe and stay at home. Thank you so much.